Good evening, friends. Let us continue with accounting standard number 18, last standard for the day. Important, you have to revise all the 4 standards that we have finished. I am sharing answers of AS17 also on your group. It's shared. Few questions I have not prepared answers. I given answers for majority of the questions of AS17 on your Telegram group. You should try to solve them first. Please do not create any backlog whatsoever in these standards because unnecessarily you will fall in trouble. तो आपको कल टेस्ट लिखना है, 3 चैप्टर्स है, ब्रीफली रिवाइज करना तीनों चैप्टर्स को. आज शाम रिवाइज कर सकते हो, कल सुबह आप टेस्ट लिख सकते हो, दोपहर में ये चारों स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू करना. AS4 छोटा सा ही है, 20 भी छोटा ही है. समरी देख लेना. किसी बच्चे ने समरी भेजा था मुझे, क्या बोले, एक बच्चे ने भेजा, उसका हैंडराइटिंग ही घटिया, लेकिन तेरी अच्छी है. भेजा है क्या तुमने PDF? कितने पेजेस से? तूने बनाया तो PDF भेजना. सो आई हैव वन समरी फ्रॉम वन स्टूडेंट बट हैंडराइटिंग इज नॉट लेजिएबल. तो जिन्होंने बनाया PDF भेजो मुझे, मैं बाकी बच्चों को शेयर करता हूं ग्रुप पे. PDF अच्छे से भेजना, क्लैरिटी के साथ. चारों स्टैंडर्ड आपने खत्म करने चाहिए प्रॉपर तरीके से. एंड देन राइट टेस्ट फर्स्ट एंड राइट ऑल द 4 standards. I go ahead with accounting standard 18, 5th standard in the series. We have just one day. We'll be able to finish advanced account by 28th of February itself. No scope of finishing it earlier, substantially earlier, because we have spent 2 extra days in banking. 1 extra day I spent in AS20, and 1 day I'm missing in accounting itself. I'm not able to tally, so I just ignored. So नहीं कहीं तो ठीक से एक्सेल में डाल के समझेगा, लेकिन वी हैव अ डिसेंट शॉर्टफॉल फॉर FM Eco. It can't be done by 28th of February unless until I do 2 things. Either we take on a Sunday or we skip discussions. Automatically it can be covered. Entire Eco can be covered in around 10 to 15 lectures. Doesn't need too much of time. So we'll have to manage certain lectures of FM on Sunday. Tomorrow I am not taking in any case. Maybe from next Sunday we'll have to work, but कल का Sunday आपके पास है. तो रिजल्ट डे सर, रिजल्ट डे मतलब फाउंडेशन रिजल्ट डे क्या, कब लगेगा? कभी भी लगने दो ना, मेरे को क्या करना है. फाउंडेशन का रिजल्ट एक्स्ट्रा वाले लेक्चर्स, एक्स्ट्रा लेक्चर वेस्ट. हाँ वो एक एडवांस अकाउंट में एक लेक्चर, हाँ रिजल्ट की वजह से गया था एक लेक्चर. ओके ओके, एडवांस का एक लेक्चर रिजल्ट की वजह से गया था. इट्स ओके. एडवांस वी कैन फिनिश बाय 28th of February. आई हैव नो इश्यूज ऑन दैट. एक आधे दिन का प्लस माइनस हो सकता है. एडवांस में इतना इशू नहीं लग रहा है मुझे, और कुछ एक्स्ट्रा का जरूरत नहीं, लेकिन मुझे इशू लग रहा है FM Eco में. That is basically because of explanation, nothing else. Like Eco national income, I had 1 lecture was enough for national income by giving you 12 definitions. वो क्या थे? 16 combinations थे. 16 combination लिखने को कितना टाइम लगता है? ऐसा आता है. वही तो 16 combination मॉड्यूल में लिखे हैं और 3 मेथड, बात खत्म. बट थोड़ा टाइम लगेगा. I go ahead with accounting standard 18, another standard which is about disclosures. अकाउंटिंग standard 18, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स. बच्चों को इतना इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस नहीं है, लेकिन एक चीज सुन ला, रियल लाइफ में जब इन्वेस्ट करने जाओगे यही स्टैंडर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा टू असेस
कैरेक्टर ऑफ प्रमोटर, और जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन हम जिंदगी में मार्क्स, वेल्थ, घर, गाड़ी, नंबर्स, हर एक बिजनेस के रिस्पेक्टिव नंबर्स, इन मटेरियल चीजों में हम उलझे रहते हैं और हम कैरेक्टर असेसमेंट भूल जाते हैं। तो अगर आपको प्रमोटर का कैरेक्टर या कंपनी का एक कॉर्पोरेट लेवल पे कैरेक्टर डिसाइड करना है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच टेल्स यू अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। सो इफ द promoters of the question basically arises, how can a company have relatives? Company will not have relatives, but company's promoters will have relatives. क्या किया तूने? निकाल के रख, ठीक से बाहुबली खींच ले, ठीक है, बाजू रख। दो, अरे 2-3 लोग जाना है उधर, पकड़ो ना, इट्स नॉट, डोंट वरी। इट्स ओके। अरे बेटा निकाल के दीवार पे रख, उधर वो जो बैग रखा है उस बैग को, बॉटल को बाजू रख। हाँ, नीचे से नहीं निकला है। okay. ठीक है, लेट इट बी। सो वरती है, निकालो मत, निकालो मत। परफेक्ट निकल रहा है क्या? पूरा ऊपर कैसे जाएगा? उधर साइड में रख बस। Listen up carefully. I do not want any discussions. So, if you want to assess a character of a company as to how many transactions are taking place within the group with reference to subsidiary company, associate, or holding companies, or your relatives of the promoters, or key management personnel itself, then it is very important to assess requirements of accounting standard number 18. So AS 18 basically tells us what are related parties, number one. Number two, it also tells us related party relationships, and it has identified around 12 relationships which need to be reported. How many? 12 relationships which are required to be reported. वो कारपेंटर को बुला के रख, कारपेंटर को बुला के उसको फिट करने को बोल। नीचे रहेगा तो देख, आएगा आएगा आज, उसको बोल के रख, प्रतीक को फोन कर। सो क्या बोला? उसका नाम प्रतीक है। वो अपने को एक बंदे को मारने का भी था ना अतुल, उसको, उसका नाम भी प्रतीक था ना मेरे हिसाब से, उसको भी बुला के रख। सो listen up carefully. So two things: identify what are related parties. Number two, identify related party relationships. And number three, make disclosures about these transactions. ऐसे मल्टीपल चीजें इस स्टैंडर्ड में कवर्ड है। तो मैं स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग टाइम इसके ऊपर आता हूं। कम डाउन टू कॉन्सेप्ट बुक ऑफ AS 18। मैंने बहुत सारा एक जनरल वाला चीज लिखा है, तो देखो, why these disclosures are required. I told you, in a country like India, when the family businesses are dominating, where promoter shareholdings are almost 50-60%. In the foreign countries, many businesses are professionally managed. Does not mean in a professionally managed business everything is good. No, I'm not of that type that everything of the West is good and everything of India is bad. That is a third class attitude of the people who think that everything that goes on in the US is good and everything that goes on in India is bad. No, there are a lot of good things that happen in our country. It's just that we don't recognize them.
So in a foreign countries, you don't have family managed businesses of a level where we have in India. So अब बोलेंगे इसका relevance क्या है? When it is a family managed business, there is a tendency to carry out a transactions with some of your relatives, bypass the profits from your company to your relatives, and then by doing these things, to try to make a loss to the minority shareholders. Let me give you one example where this was starkingly relevant. I don't know the exact percentages at that particular point of time, I don't recollect. But this was a very, very important event in the corporate history of our country for India's largest automobile company, Maruti Suzuki. This disclosures led to Maruti Suzuki cancelling one of the very important plan that they had done. Try to understand the significance through this basic example and you'll understand why I keep on stressing so much on character or corporate governance. You'll never ever invest in a companies where corporate governance is pathetic. Had I known that Byju's would make a delay in reporting the financial statements, or Byju's will follow UBS revenue recognition policy, I would not have invested ever in the Byju's. My investment was prior to that. Now there is no option to exit as such. Exit is at loss, so it's better to carry position than the loss, because still there is a chance that it could learn. As far as the statement of the Byju himself is concerned, as of now, he thinks that they're gonna, worst is over and they're gonna do good things. At least they're recognizing that they've done some wrong things. मारुति सुजुकी ने भी ऐसा किया था या करने जाने वाले थे वो, और अनफॉर्चुनेटली जिसने बजाई थी वो LIC था, और जो कभी एक्सपेक्टेड भी नहीं था, किसी को सपने में नहीं लगा था LIC या ऐसा कॉर्पोरेट इंडिया के कल्चर में हो सकता है. मारुति सुजुकी is a company. Suzuki owns a large stake in it. This is a company registered in India. This is registered on Indian bourses. Bourses is stock exchange. Suzuki controls a large chunk of shares of Maruti. I don't know the exact number at that point of time. This story goes back to, I think, around 2014-15. I don't recollect the year, date, anything right now. Back then I used to be heavily positive about Maruti. We had entered Maruti at around 2017 batch. It was roughly around 1200 levels. Carried Maruti till the levels of almost 8,000. Gave a great money, and then the Maruti started lagging. So one of this event was huge. Suzuki owns, let's say, 57%. I don't know the percentage. It is just a hypothetical number that I am putting across. So Maruti Suzuki becomes, let's say, subsidiary of Suzuki. In my opinion, it is below 50 now, substantially below 50 now. But assume, ये गाड़ियां बनाती थी मारुति सुजुकी, एंड गाड़ियां सेल भी करती थी. So this was manufacturing plus sell. A large chunk of technology that is required for manufacturing these passenger vehicles comes from Suzuki Corporation in Japan. So Suzuki proposed in the board of directors meeting at Maruti. Suzuki had the nominees on board of Maruti. So Maruti Suzuki proposed a restructuring plan, which was hiving off manufacturing division. So manufacturing henceforth will be done by 100% owned subsidiary of Suzuki. Suzuki will incorporate a subsidiary in India. That subsidiary will look after manufacturing. Manufactured cars would be sold here. To whom? Maruti Suzuki, and then Maruti will sell it to customers. So the role of Maruti
which was manufacturing plus marketing and sale, was restricted to just the marketing and sale. These cars would get produced by whom? These cars would get produced by Suzuki itself. And for that, Maruti had received one huge land parcel from Gujarat government. Modi was Prime Minister, Chief Minister at that point of time. So Mr. Modi had given them the huge parcel of land because there are some clashes that had happened in the Gurugram premises of Maruti. Death हो गया था लोगों का employees के बीच में झगड़े करके. And Gurugram plant उनका बहुत सारा trouble में चल रहा था. So they decided to shift their manufacturing base from Gurugram to Gujarat, and for that the land parcel was allotted, and that land parcel was to be shifted by Maruti Suzuki to Suzuki's subsidiary. And this transaction was approved in the board of directors meeting of Maruti Suzuki. This transaction got approved in the BOD meeting of whom? Maruti Suzuki. It was to be put up to the shareholders for their approval. And that's where the corporate governance came into picture. They said that what you are trying to do is you are trying to take, जो भी Maruti Suzuki के shareholders थे, they were earlier getting a profit from manufacturing plus sale. Now they will have only profit from marketing because certain profit will get shifted to Suzuki and this. And the argument that was given that to carry out a heavy manufacturing we need a more capital, and we don't have more capital, that more capital Suzuki has. The argument that was given was why manufacturing should be given? To develop new models, to develop electric vehicles, and to tap for the future growth. The capital requirements can be easily met by a parent called as Suzuki holding company. This transaction put on the recommendation, this was to be put up for the shareholder approval, and shareholders didn't approve this transaction. Obviously, when the corporate governance issues were raised before the meeting itself, Maruti, in my opinion, had cancelled the agenda item. Maruti ने meeting के cancel किया था. But अगर ये transaction, imagine करो, if there is no concept of related party disclosures, then crony capitalist, in case you understand the phrase, promoters who are greedy for the money, crony capitalism is a wonderful phrase. A capitalism which really doesn't look for the benefit of everyone, they just look at for your self benefit. Capitalism should be there, no doubt about it, but if a capitalism just looks for benefits of the persons who have the capital rather than looking at the benefit of everyone, it is called the crony capitalism, and that is bad. That is bad. So what Rahul Gandhi keeps on saying is this Ambani and Adani are crony capitalists, which I don't think so personally. That is political argument. If they are making profit, it's okay, but they are not making an exorbitant profit. It's not that they have created a monopoly. There is a decent competition that they have got in their respective field. It's just that no one else is coming up and giving them a big fight or a big run for their money. There can be someone who can give a big run to the Reliance in terms of retail. You never know, DMart can crush Reliance. So point is, अगर ये related party disclosures accounting standard के अंदर या law के अंदर भी आप जब general meeting का notice भेजते हो या board meeting का notice भेजते हो, तो आपको, I don't know whether you have read every item of business in a general meeting or in a EGM or AGM wherein directors are personally interested needs a separate disclosure in an explanatory statement. If company is going to perform a particular agenda, particular business, उसको agenda बोलते हैं, ordinary business and special business. If any item of ordinary business or a special business involves director or a key managerial personnel or any other significant position person having a personal interest in it, you need to disclose it before the shareholders or before the board of directors, and then the collective wisdom should prevail. Collective wisdom, that is, let the shareholders be aware and then they take the best action. In many cases, obviously, shareholders don't understand. I've seen n number of companies carrying out related party transactions and shareholders not understanding it because उतना intelligence level नहीं होता, उतना activism नहीं होता है. But these transactions or these standards like this force it to the management, to the promoters
to be rational, to be ethical, and report transactions to the shareholders. At the back of the mind, they think that, oh, what if shareholders start questioning us? What if stakeholders or government or income tax authorities start questioning us? You can do a related party transaction to avoid the taxes. For example, tax rate in India for a corporate entity is, let's say, 30%, for example. And let's say tax rate in Netherlands is, let's say, 5%, or Finland is 5-7%. A large number of European nations have small European nations have very less rate of tax because their needs are quite less. Now imagine a situation, I have a profit in India and I am paying tax at the rate of 30% in India, whereas majority of my profit comes from export. I export the goods to, let's say, United States from India directly. Whatever profit I earn from this, obviously tax is payable in India at the rate of 30%. Let me bypass this entire tax by routing the transaction through subsidiary created in Netherlands. So I first create a subsidiary in Netherlands. I sell the goods from India to that Netherlands subsidiary, and I purposefully charge a lower sell price from India to Netherlands. And I show some minor profit in India, and then Netherlands subsidiary does some packaging or does some value addition on a paper and exports the goods to United States from there. Physically, goods might not go to Netherlands. Physically, you might have the warehouse somewhere in the Middle East. And you export the goods. What are you trying to do? You're trying to avoid taxes. That is why Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, the best in the world in terms of economic issues and taxation issues, OECD way back prepared transfer pricing guidelines, which are there even today, and they're gone even to a level beyond that. Today there is something called as a base erosion and profit shifting, BEPS. इनकम टैक्स में कभी आपने पढ़ा होगा मालूम नहीं मुझे, ये सब इनकम टैक्स के रूल्स है. बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग एंड CBCR कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, ये गाइडलाइंस OECD ने मेजॉरिटी नेशंस को क्या किए हैं, मैंडेटरी किए हैं. एंड द लास्ट ईयर when there was a summit of the G20 nations or G7 nations, not G20, G7, they agreed on a global minimum tax rate of 15% at least. So a country should not be allowed to levy a tax lower than 15%, so that at least the arbitrage that you get by shifting profit from one country to a smaller country can be reduced. Right now arbitrage is huge. If Netherlands charges 5% and India charges 30%, or a large number of Indians who trade, like if I, instead of doing a trading in India, I start doing the trading in Singapore, or I start doing a trading in Dubai, my taxes can come down heavily. Taxes can come down heavily. Now there is a higher cost of living, but what if my income is way higher and the cost of living is just 3-4% of my income? Let's say my cost of living is 3-4% of my income, and even if that doubles, it becomes 7-8% of my income. But the saving in the taxes right now in India, let's say 100 rupees is my income, 4% is my cost of living, and 30% is a tax. So I am able to save roughly 66%. So में से 30 टैक्स गया, 4 रुपया कॉस्ट ऑफ लिविंग पे गया मेरा, ठीक है. अब मैं सिंगापुर में शिफ्ट होता हूं, मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग डबल होता है, 4 से 8 होता है मेरे इनकम का, 4 to 8, but my taxes come down by 30 to 7. Singapore has a very low rate of tax, income tax. They have high indirect taxes comparatively. Lower rate of tax, especially for securities, very low. Why? Those countries don't need a huge expenditure on defense or variety of other things which is not there, so they don't have need. So my total expenditure is 7 of taxes and 7 of cost of living, 14. My savings go to 86. Plus a better quality of, better standard of living. Singapore I'm talking about, I'm not talking about Canada, I'm not talking about the United States. It doesn't work it out. In US or Canada, you need to have a income itself going up. Then only it becomes sustainable. Or at least you just say, forget about it, I just don't want to stay here. I'm ready to have a lower savings, but I just want to shift out of India. अब इमेजिन करो, कंपनीज ऐसे प्रॉफिट्स शिफ्ट करने लग गए अलग अलग देशों में जहां पे टैक्सेस बहुत कम है. हाउ विल इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड? हाउ विल टैक्स अथॉरिटीज अंडरस्टैंड?
How will governments understand? How will various stakeholders understand? To make it understand, there must be reporting of the transactions that are carried out during a year between a company and its related parties, maybe individuals, maybe other companies, maybe partnership firms, maybe any other format, legal format. Many people try to skip this by doing innovative transaction routing, like forming a company in some countries where, let's say, transparency is not there. They have very poor transparency rating, something like a Cyprus or something like Mauritius or something like Panama Island. So you can shift the profit to the other countries through these countries where there are no regulations literally. अब इसके ग्लोबल लेवल पे ये जो सारा पैसा होता है, इसका लार्ज अमाउंट ऑफ मनी कुड गो इनटू टेरर फाइनेंसिंग, क्योंकि यू नीड टू पे ब्राइब्स और यू नीड टू पे मनी टू सम पीपल टू गेट इट डन. ये सारे का बहुत ज्यादा रैमिफिकेशंस हो सकते हैं बिजनेसेस के ऊपर प्लस ग्लोबल लेवल पे. इसलिए गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन टैक्सेशन फ्रंट, ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रंट रिक्वायर टू असेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड इन अ कंपनी. Even if you look at ESG norms, E stands for environment, S stands for social, and G was for governance. That G, a large chunk of G, is your governance. How do you, as an organization, look for legal compliances, look for your stakeholder rewards, variety of things. हमें ये बग छोड़ दो, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए था. That is why you require a related party disclosures चैप्टर पे आ जाते हैं. तो रोड मैप फॉर अंडरस्टैंडिंग AS18 चैप्टर अभी शुरू हो गया, जग जाओ. रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन हमें करना है और फिर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स है. वंस रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन इज मेट, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर डिफाइंड रिलेशनशिप्स. If a transaction is carried out with a relationship mentioned in AS18, then only disclosure is required. Else, question of disclosure does not arise. So let us start. First, let's understand definition of related party. Now, this definition is not that important as compared to relationships. What is reported? Not the related party. What is reported is related party relationships. आपको डिफरेंस क्या है समझ में आएगा. हैव पेशेंस. देखो, रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन देखना. पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड ओनली इफ at any time during the reporting period, that is a quarter or a year, normally a year, one party has the ability to control the other party. So one person has a control over another person, or you can exercise a significant influence. फाउंडेशन में ही सिखाया होगा ये वर्ड्स, कंपनी लॉ में आए थे. होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के लिए कंट्रोल रिलेवेंट है और एसोसिएट के लिए सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस रिलेवेंट है. बट जो डेफिनेशन कंपनी लॉ में दिए और यहां पे दिए वो सिमिलर नहीं है. सो इफ अ पार्टी इज एबल टू एक्सरसाइज अ सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस ओवर द अदर पार्टी इन मेकिंग व्हाट, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस. इफ यू आर एबल टू मेक exercise a significant influence in making financial or operating decisions, we say that you are related. So how can control arise? Control can arise by ownership of directly or indirectly more than 50% of voting power. Control कब होगा? If you own directly or indirectly more than how much? 50% of voting power. Indirectly is through subsidiary. Or you control composition of the board of directors. In many cases, you might not have more than 50% voting right, but you have been given a special rights by articles of association, whereby you can appoint majority of the directors. Big Limited owns 40% of Small Limited, but articles of association of Small Limited mention that 5 directors out of 8 of Small will be appointed by Big. This is a special right given by
स्मॉल टू बिग। आप बोलेंगे सर वाई सो? बिग ने जब पैसा इन्वेस्ट किया तभी कंडीशन डाला होगा कि हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे प्रोवाइडेड वी गेट टू अपॉइंट 5 डायरेक्टर्स आउट ऑफ 8 एज अ नॉमिनी डायरेक्टर्स. So you can control another entity by controlling composition of the board of directors. These are technically known as the shareholder agreements or articles of association के अंदर you can customize articles of association. There is no need at all to follow a table F guidelines as it is. And there is no need to remember any of the table numbers like memorandum of association A, B, C, D, E, F, G, A, H is articles of association because those formats as given in the company law itself are outdated piece. The real articles of association are required to be drafted by understanding what are the requirements of shareholders, what rights do they want. So articles of association mention rights of the shareholders. अब टेबल एफ देखोगे, टेबल एफ में बहुत सारे मिनिमम राइट्स लिखे हैं, कोई क्रेजी नहीं है टेबल एफ. Like there are a lot of special rights which are given to Tata Trusts in Tata Sons. टाटा के ट्रस्ट है बहुत सारे, वो टाटा सन्स को कंट्रोल करते हैं. इंडिविजुअल ट्रस्ट डजंट ओन मोर देन 50%. All trusts put together own 66%. But individually no one owns more than 50. But still they have got rights like a promoter. Why? There are special provisions in the articles of association. Using those provisions, Cyrus Mistry was removed. Because Tata Trust के जो लोग थे, जो ट्रस्टीज थे और प्लस टाटा फैमिली के लोग थे, उनको नहीं लगा ठीक जो भी तरीके से टाटा सन्स मैनेज हो रहा था. So they had a privilege. There are shareholder rights which are upheld by the Supreme Court also. Initially NCLT ने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया. So what another example, a classic example is Mr. Bhatia and Mr. Gangwal of Indigo Airlines. These two people own around 60 to 63% of Indigo or Interglobe Aviation. But they do have rights to appoint majority of the directors or take part in the operations. So what you need to understand is the control is not necessarily through shareholding. Control can come through a agreement also between the parties. Or control can come up by with a substantial interest, 20% or interest in voting power, either directly or indirectly, and power to direct financial operating policy by statute or by law or by agreement. Now you must be crazy. There must be some severe doubt. There is a clause A, clause B, clause C. Clause A talked about 50% criteria. Clause C talks about a 20% criteria. So does a clause C make clause A a redundant clause? Answer to that is no. The 50% is an absolute number. The 20% is a conditional number because there is 20% has a and criteria. Even if you own more than 20% of another enterprise and you need to control it by in operating policies or financial policies by law or by agreement. So what's the difference between clause A and clause C? Clause A is greater than 50%. Just moment you cross ownership of more than 50%, you have a control over the other company and you are related parties. Clause C requires an additional condition. समझा क्या रे? Power to appoint or remove directors, GK. Further points, general knowledge. Concept launcher 1, general knowledge. आप देख लेना just. A owns 60% of voting of B, which in turn owns 40% voting of C. And A also owns 15% voting of C. Foundation में सिखाया हुआ है मैंने. Whether A and C are related to each other. Answer to that is yes. Why? A directly owns 40% of C plus indirectly, sorry, उल्टा बोला मैंने. A directly owns 15 and indirectly owns 40. Do not apply maths. कुछ समझा क्या? A owns 60 of B and B owns 40 of C and A owns 15 of C. So how much A owns? 40 indirectly and 15 directly. So A owns 55% of voting power. You will say, sir, why? C की जब भी मीटिंग होगी, C के मीटिंग में ये जो 40% वोट है वो किसके हिसाब से पड़ेगा, डलेगा?
whatever it is. How the vote will be cast? Vote of this 40% will be cast as per the wish of A, plus 15% is also as per the wish of A. This does not mean 55% of profits of C will go to A. 40 into 60%, 24. 24% profits of C will go to A plus 15%. So A will get 39% profits of C. क्यों? जो 40% B के पास जाएगा और वो 40 का 60% A के पास आएगा. That is, A will get 39% of profit. But for the purpose of deciding control, how much profit you will get is not relevant. What is relevant? How much voting power you have. So don't apply maths. Maths is relevant to maths के हिसाब से आंसर आएगा it is not a related party. But the correct answer is they are related parties. You should not apply maths. क्यों बने यहाँ पे लॉट किया. और एक एग्जांपल है. So this is crazy example. This is example of a joint venture. Tata Auto Components. This is the example which I learned. मतलब वो सिंहगढ़ को गए थे उस दिन उसका CFO जो मिला था ना वो यही था याज़ाकी का CFO था. तो किसको तो मिला था. So ये कंपनी ने मेरे को बहुत सिखाया था. टाटा का this is Tata Yazaki, one of the very few Tata companies which did wonderful fraud. टाटा ने नाम विड्रॉ कर लिया था उसका बाद में. Now it is Yazaki Corporation. Tata has exited out of it. It's the world's largest wiring harness manufacturing company. गाड़ी के अंदर जितना भी केबलिंग होता है सारा केबलिंग ये Yazaki करता है. ग्लोबल जायंट है, नंबर 1 है वर्ल्ड में. बट कुछ लोगों ने वहां पर फ्रॉड किया था और वो फ्रॉड से हमको इतना सारा सीखने का मिला था. बिग 4 थे सारे सब ऑडिटर्स और मस्त पैकी फ्रॉड किया था और फिर गवर्नमेंट ने आके लॉक लगा दिया था. कोई अंदर एंटर नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने टैक्स फ्री इंपोर्ट करते थे, सेइंग दैट दे आर डूइंग एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट कुछ होता ही नहीं था. इंपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी एंड दैट रॉ मटेरियल वाज सोल्ड इन इंडिया इटसेल्फ. द कंडीशन वाज यू विल इंपोर्ट रॉ मटेरियल एंड यू विल मेक अ फिनिश गुड्स सो दैट यू जनरेट एम्प्लॉयमेंट हियर इन इंडिया and you export it back to the respective country. So at least employment will be generated in India, income tax will be earned in India. So President of India had given them the exemption from paying taxes. There is a bonded warehouse concept. You learn bonded warehouse का concept आपने GST में किया कि नहीं मालूम नहीं मुझे. Bonded warehouses. So you have to execute a bond in favor of President of India. वो bond execute किया था और bond छोड़ के इन्होंने सब कुछ जो नहीं करना चाहिए था वो कर रहे थे. 3000 लोग मिलके बस वही चूना लगा रहे थे और ये 7-8 साल तक चल रहा था. जाने दो. इसमें टाटा ऑटो कंपोनेंट्स करके एक कंपनी है, पुणे बेस्ड कंपनी है, लॉ कॉलेज रोड पे ऑफिस है. 50% टैको ओन करता था इसका और 50% एजाकी ओन करता था उस जमाने में. और ये टाटा एजाकी था जहां पे हम ऑडिट करते थे. 50-50% है. अभी क्वेश्चन क्या है? डज टैको और याज़ाकी कंट्रोल टाटा याज़ाकी? कंट्रोल के लिए मोर देन 50% था लेकिन नीचे 20% भी था ना. 20% इज टाटा याज़ाकी इज अ जेवी एग्रीमेंट बिटवीन टैको एंड याज़ाकी. याज़ाकी इज फ्रॉम जापान, टैको इज फ्रॉम इंडिया ओनली. टाटा ऑटो कंपोनेंट्स इज टैको. So whether TACO and Yazaki Limited are related parties, whether these two are related parties, answer is no, because they don't exercise a control on each other. But the question, important question is whether the TACO and Tata Yazaki are related parties. First answer is no. कुछ समझा क्या? Second answer is yes. Tata Yazaki is a JV between TACO and Yazaki. They satisfy clause C of the definition, that is substantial interest plus power to direct the policies by an agreement. The agreement here is JV agreement. तो कहीं पे बोल कंट्रोल होने के लिए यहां पर 50% ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या? हाँ ना, 50% कंट्रोल होना जरूरी है क्या? नो. आप लेस देन 50% ओनरशिप रख के भी कंट्रोल कर सकते हो. सो टेल मी हु आर रिलेटेड पार्टीज? टैको एंड टाटा याज़ाकी आर related parties. Similarly, Yazaki and Tata Yazaki are also related parties. Do not apply maths rule. A relative of relative is your relative. A likes B, B likes C, hence A likes C. No. So, who are related parties? Tata Yazaki and TACO. And Yazaki and Tata Yazaki are related parties. Who are not? TACO and Yazaki. Third example,
India Limited owns 80% of Maharashtra. India Limited owns 40% of Gujarat. Maharashtra owns 50% of Mumbai and Gujarat owns 50% of Mumbai. Whether India Limited has a control over Mumbai. India Limited has 80% control over Maharashtra and Maharashtra has a control over whom? Mumbai. Answer is yes. So यहां पर देखो मैथमेटिक्स टेल्स यू, मैथमेटिक्स छोड़ दो, डोंट अप्लाई मैथ्स. क्लॉज ए से अभी यहां पर क्या दिया, जेवी लिया है, ऐसा दिया नहीं है, एब्सेंस है, देयर इज नो डायरेक्ट कंट्रोल. इनडायरेक्ट कंट्रोल इज ओनली थ्रू सब्सिडरी. हु इज नॉट अ सब्सिडरी? गुजरात इज नॉट अ सब्सिडरी. सो इनडायरेक्टली यू कंट्रोल ओनली 50%. इनडायरेक्टली यू कंट्रोल 50%, लेकिन डेफिनेशन में चाहिए मोर देन 50. तो क्लॉज ए तो अप्लाई नहीं हो रहा है. क्लॉज सी में कवर हो सकता है. क्लॉज सी में यहां मैंने लिखा है क्लॉज सी इज नॉट सेटिस्फाइड सिंस एड ऑन कंडीशन इज नॉट मेट. एड ऑन कंडीशन क्या था क्लॉज सी का? देयर मस्ट बी एग्रीमेंट. यू शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द ऑपरेशंस ऑफ मुंबई थ्रू सम एग्रीमेंट. कोई एग्रीमेंट लिखा है क्या क्वेश्चन में? सो मुंबई लिमिटेड इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ऑफ इंडिया. However, India and Mumbai may be related parties by virtue of definition of significant influence below. Right now, which definition we did? Control. Control का definition क्या बोलता है? Control by way of ownership of more than 50% voting power. Control by way of composition of board of directors. Third, control by way of having substantial interest of 20% or more and participation in operational oblique financial decisions by virtue of an agreement oblique law. यहां पे क्या नहीं था? एग्रीमेंट नहीं था. कहां पर? ये मुंबई वाला जो एग्जांपल था ना, उसमें एग्रीमेंट नहीं था. सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस के थ्रू भी रिलेटेड पार्टी हो सकते हैं. देखो डेफिनेशन देखो, रिलेटेड पार्टी का क्या था? Parties are considered to be related parties if there is a control or if there is a significant influence. अभी significant influence बहुत ही lower level का definition है as compared to control. Significant influence is participation in the financial or other operating policy decisions of enterprise, but does not mean control. You participate. The moral of the story is whether there is a control or whether there is a significant influence does not matter. Either of the two is there, you are related party. By the way, तुम related party हो या नहीं, वो ज्यादा relevant है ही नहीं. क्या relevant है? Related party relationship. इसके बाद फिर ये definition कर क्यों रहे? एग्जाम में आता है इसलिए. Ultimately reporting किसका होगा? Related party का नहीं होगा, related party relationship का होगा. वो relationship आगे है, 12 रिश्ते देखने हमें. How it is exercised? By controlling board of directors or by participating in policy or huge number of intercompany transactions, something like that. Don't even read. So significant influence के लिए criteria कितना दिया है? 20% और more का. But additional condition नहीं है. वो जो add-on condition था ना control में, वो condition significant influence में. तो इंडिया मुंबई का जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में क्या हो सकता है? यू कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस इवन विदाउट एग्रीमेंट. आई कम डाउन. ये नहीं पढ़ा तो भी चलता है. अभी देखो इतना समरी देखो बस, समरी ऑफ रिलेटेड पार्टी. क्योंकि मेन चीज क्या है इसकी, ये स्टैंडर्ड की मेन चीज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स. मेन चीज क्या बोला मैंने? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स देखना है आपको. देखो समरी क्या है? एक्सरसाइज ऑफ अ कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस इन पॉलिसी डिसीजंस इज मस्ट. आइदर देयर शुड बी कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस. अच्छा सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस 20% के साथ होता है. कैन सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस बी देयर विद लेसर देन 20% ऑल्सो? यस. देखो यहां पर एक एग्जांपल है. शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ टाटा स्टील अज्यूम्ड इज एज अंडर. Tata Sons controls 15%, individuals control 85%. Whether Tata Sons can be said to have significant influence? Answer is yes. Why? That 15% gives them
right to participate in financial or other policy decisions. 20% is just a guidance. तो रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन क्या है? वेरी वेग डेफिनेशन है. वाई? इट सिंपली सेज you should be able to have control or influence in policy decisions. If you can control or have a significant influence in policy decisions of another enterprise, we call it as what? You are related parties. और उसका फायदा कुछ नहीं. क्यों? रिपोर्टिंग रिलेटेड पार्टी का नहीं है, डिस्क्लोजर रिलेटेड पार्टी के नहीं है, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स के है. वो आगे आएगा. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज मच वाइडर देन द कंट्रोल एंड हैज टू बी डिसाइडेड फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस, एंड दैट्स व्हाई यू विल नेवर हैव क्वेश्चन. उसके लिए एग्जामिनर शुड आल्सो बी कैपेबल ना. Significant influence may arise out of several situations, for example dependence on technology or just taking a money. छोड़ दो. IMP अभी शुरू होता है इंपॉर्टेंट पार्ट. क्या है ये? 12 रिश्ते हैं. आप बोले सर इधर 5 रिलेशनशिप्स किया. अरे 5 पैराग्राफ है 3A to 3E, बट एक एक पैराग्राफ में ज्यादा लोग हैं. ये 12 रिश्तों का आपको डिस्क्लोजर करना है. और कंपनी के ये 12 रिलेशनशिप्स है. 12 में कौन कौन आ रहा है, उनके नाम आपको देने पड़ेंगे, और उनके साथ साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन किया, क्या क्लोजिंग बैलेंस है, वो भी देना पड़ेगा. अगर आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया तो नाम भी देने पड़ेंगे. नाम तो देने पड़ेंगे. ये 12 लोगों के नाम है. 12 नहीं, लोग ज्यादा हो सकते. 12 रिलेशनशिप है. एक रिलेशनशिप में 3-4 लोग हो सकते. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ सब्सिडरी. कहां पे बोला है कि सब्सिडरी इज ओनली वन? Can't you have 4 subsidiaries? I was talking about this. तुम भी वही समझ रहे थे. तेरी शक्ल देख के लगता नहीं तेरे को ऐसी चीज समझेगी कुछ. अपना पढ़ाई पे फोकस कर, जिंदगी वहां पर ही अच्छी हो जाएगी. देखो पहला रिश्ता. ओके, जनरल नॉलेज पहले देखो. Disclosure prescribed by AS18 applies only for relationships given in para 3A to para 3E. इसके अलावा और कोई भी रिश्ता हो वो कवर्ड. Hence once the party satisfies the definition of related party, which you have done already, once you satisfy definition of related, we need to check whether relationship is related party, whether the relationship with related party is covered in the para 3, or if it is covered in para 3 then only it will be counted. कुछ समझा क्या? चलो एक एक पैराग्राफ देखते हैं. अभी टोटल पैराग्राफ 3 है, उसके अंदर सब पैराज 5 है, लेकिन रिश्ते 12 है. 3A में देखो कौन कौन कवर्ड है. एंटरप्राइजेस दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर सब्सिडरीज कंट्रोल द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज. पीपल हु कंट्रोल यू मतलब योर फादर, योर होल्डिंग कंपनी और अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी. आई होप पेरेंट्स हैव कंट्रोल ऑन यू. किसी घर में वाइस वर्सा है तो मुझे बोलो. ऐसा बजाता हो रहा तुमको. किसी घर में तुम्हारा बाप तुमसे डरता है, हाथ ऊपर करो सिर्फ. देखो सर, पेरेंट्स प्लस एल्डर सिबलिंग सर. कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस. एंटरप्राइजेस दैट कंट्रोल रिपोर्टिंग एंटरप्राइज. मतलब इसमें कौन कौन कवर्ड है? देखो इसमें कवर्ड है होल्डिंग कंपनी और अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी. अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी मतलब तुम्हारे होल्डिंग कंपनी की होल्डिंग कंपनी. सो हु इज कवर्ड इन पैरा 3A? फर्स्ट होल्डिंग कंपनी, एंड होल्डिंग कंपनी इज होल्डिंग कंपनी, और दैट ऐसे ऊपर के सब तुम्हारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स स्क्वायर,
हायरार्की किधर भी, अभी फॉर योर इंफॉर्मेशन इतना बड़ा हायरार्की होता नहीं है. वाई? देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन लेयर्स. लॉ में आपने किया होगा. मैक्सिमम कितने लेयर्स होते हैं? 2 लेयर्स. मैक्स लेयर्स अलाउड आर 2. 2017 के अंदर ये रूल्स आए. सो who is related party relationship? First thing, holding company. Number 2, enterprises that directly or indirectly through one or more subsidiaries are controlled by reporting enterprise. ऊपर क्या था? Control the reporting enterprise. Now this is controlled by you. So subsidiary. क्या क्या कवर किया बच्चा? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी. सर फॉर इन्वेस्टमेंट कंपनी ओनली रन. अरे गधे, होल्डिंग कंपनी क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट कंपनी हो सकती है क्या? इट कैन बी नॉर्मल ऑपरेटिंग कंपनी ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, बजाज फिंसर controls Bajaj Finance. Bajaj Finserv is not just an investment company. It does its own business and it controls Bajaj Finance also. Reliance Industries is a holding company of Reliance Jio. Reliance Industries does its own business. It's not an investment company. मैंने कहां पे बोला इन्वेस्टमेंट कंपनी है? कुछ भी अपने खुद के मन से लॉ बनाते हो. लिखा लिखा मैंने इन्वेस्ट. मैंने सिंपली क्या बोला? Para 3A covers 3 things. Number 1, holding company. Number 2, subsidiary. Number 3, fellow subsidiary. ये तीसरा क्या है? Fellow subsidiary. अब बोले ये क्या है? Observe what is fellow subsidiary. On your screen, Big Limited has 2 subsidiaries, small and medium. Small and medium. Small के लिए holding company कौन है? Big. वो तो आ गया 3A के अंदर. स्मॉल के लिए सब्सिडरी कौन है? कुछ नहीं है. नहीं है. ऐसा कहां पे जरूरी है कि हर रिलेशनशिप में होना चाहिए कोई ना कोई? तो कौन बोल रहा है? चिराग जी बोल रहा है. एक्सपीरियंस. बेटा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ दैट यू विल हैव टू डू विदाउट एक्सपीरियंस. Better you have some wisdom to do some things without experience. May God bless you. So, Big Limited has 2 subsidiaries, small, medium. Small के लिए holding 3A में कौन कवर होगा? Big. But उसका subsidiary कुछ नहीं है. Medium is a fellow subsidiary for small. Fellow subsidiary means subsidiary of holding company. क्या बोला मैंने? Subsidiary of your holding. It's your brothers, sons, sisters, like. So enterprises that are under common control of a single enterprise, that is a fellow subsidiary. So who is covered in para 3 or para 3A? Holding company, subsidiary company and fellow subsidiary are going to be covered within related party relationship under para. तो इनके साथ जो भी ट्रांजैक्शंस करोगे आप, उनका आपको क्या लगेगा? डिस्क्लोजर लगेगा. समझा गया रे? डाउट पूछा मैंने बोला डाउट. फेलो सब्सिडरी. A company is considered to be fellow subsidiary of another company. Both the subsidiaries have same holding company. तो पप्पा एक है तुम्हारे. पैरा 3B. 3B में 4 रिश्ते कवर्ड है. अब तक कितने रिश्ते हो गए? 3. होल्डिंग, सब्सिडियरी एंड. तुम्हारे रिश्तों में बहुत ज्यादा उलझन लगती है. उनको सुलझाने की कोशिश करो जिंदगी में. बहुत ज्यादा क्रॉस होल्डिंग रहा ना तो पैटर्न मुश्किल बनता है. पैरा 3B. क्या बोला मैंने? पैरा 3B. इसके अंदर 4 रिश्ते कवर्ड है. नंबर 1, एसोसिएट ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज. एसोसिएट मतलब 20% स्टेक वाले.
You are a company, you have 23% stake in some other company. That some other company is your associate. That some other company is your joint venture of reporting enterprise. 50-50%. You have 50% stake in other company, like the Tata Yazaki question. That is covered in the definition of what? Related party relationship. अब ये बेसिक है. देखो, A has invested 23% in B. Who is B for A? Associate. And for B, who is A? Investor. So for A, B is a related party. For B, A is a related party. For B, A is a related party because of this. Investor in associate, and similarly investor in joint venture. Bouncer. A has 23% stake in B. If only point 1 and point 2 was mentioned, then B becomes related party for A. B becomes related party for if only point 1 and 2 are mentioned. For B, A is also related party because of point 3. What does the point 3 tell you? Investor in associate. What does the point 4 tell you? Investor in a joint venture. Investor in associate, investor in joint venture. Are you clear with these terms? Please note, indirect relationship is not covered in para 3b. So associate or joint venture has to be directly. It must not be through someone. Associate के लिए क्या है मैंने बोला? It is not a subsidiary but not a joint venture. 20% criteria. A company which is not your subsidiary, not a joint venture also, but you are able to have a significant influence. A enterprise in which investing party has an influence. Influence मतलब 20% or more. 20% or more, but not a subsidiary. मतलब 20 से लेके 49.99 is associate. 50 joint venture. More than 50 subsidiary. Take an example. India Limited owns 71% of Maharashtra and 51% of Gujarat. Maharashtra owns 30% of Pune, 20% of Thane, and 51% of Mumbai. Identify related parties giving applicable para number for each of the 6 enterprise. So this is important question, crazy question. For India, who all are related parties? para 3A के अंदर सब्सिडियरीज कवर हो जाएंगे. पैरा 3A के अंदर सब्सिडरी कवर हो गया. देन होल्डिंग कंपनी, इंडिया का कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है. हेलो सब्सिडरी, इंडिया का कुछ नहीं है. सो 3A के अंदर इंडिया के लिए सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात. 3B के अंदर एसोसिएट, इंडिया के लिए कोई भी एसोसिएट नहीं है. ओ बाय मिस्टेक, 3A के अंदर मुंबई भी आएगा. क्यों? मुंबई इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ इंडिया. सो फॉर इंडिया 3A के अंदर कौन कौन कवर्ड है? MH, गुजरात एंड मुंबई. वाई? इनडायरेक्टली भी सब्सिडरी है तो चलता है. 3B एसोसिएट, इंडिया के लिए कोई भी एसोसिएट नहीं है. एसोसिएट मस्ट बी डायरेक्ट. इंडिया के लिए कोई भी जॉइंट वेंचर नहीं है. डैश. So for India, only 3 relationships are covered under para 3. This is important. Answer अगले पेज पर आएगा. The important point here to note is, ये क्वेश्चन आना चाहिए. ये सब मेरे बनाए हुए क्वेश्चन साले आए नहीं कभी. ऐसा विकेट गिरेगा ना. ये चार्ट पब्लिक, डायग्राम पब्लिक, कलर वाला पब्लिक. So what is important? 3A covered indirect relationship. 3B doesn't cover. Since 3B doesn't cover indirect relationship, this महाराष्ट्र का जो एसोसिएट थे, महाराष्ट्र के जो एसोसिएट्स थे पुणे एंड ठाणे,
आर नॉट एसोसिएट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि एसोसिएट हैज टू बी डायरेक्ट कंट्रोल और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। तो देखो इंडिया के लिए कौन हो गए, 3 लोग हो गए। महाराष्ट्र के लिए इंडिया कहां पर आएगा, होल्डिंग कंपनी करके आएगा। गुजरात आएगा फेलो सब्सिडरी, मुंबई आएगा खुद की सब्सिडरी में, पुणे एसोसिएट में आएगा, ठाणे एसोसिएट में आएगा 3B के अंदर। गुजरात के लिए इंडिया होल्डिंग कंपनी, महाराष्ट्र फेलो सब्सिडरी, मुंबई ऑल्सो फेलो सब्सिडियरी। Why? Mumbai is a subsidiary of India. So Mumbai and Gujarat both are controlled in the same group. क्रेजी है, आसान नहीं है। ये रिश्ते हैं और फिर इन रिश्तों के साथ जो जो ट्रांजैक्शन किया वो आगे जाके डिस्क्लोज करने का बस। पुणे एंड ठाणे, पुणे एंड ठाणे के लिए सिर्फ महाराष्ट्र है। क्यों? 3A में, पुणे के लिए 3A में कोई भी कवर्ड नहीं है। क्यों? महाराष्ट्र इज नॉट अ होल्डिंग कंपनी। पुणे एंड ठाणे के लिए महाराष्ट्र इज नॉट अ होल्डिंग कंपनी, महाराष्ट्र इज इन्वेस्टर इन अ एसोसिएट दैट इज कवर्ड इन 3B। तो उनको होल्डिंग कंपनी को है ही नहीं। तो इंडिया इज नॉट अ होल्डिंग कंपनी ऑफ महाराष्ट्र। गुजरात के लिए मुंबई इज अ फेलो, हाँ यस, गुजरात के लिए मुंबई इज अ फेलो दैट इज कंट्रोल अंडर सेम ग्रुप ना। तो उर्दू में बोला था क्या मैंने? पुणे ठाणे के लिए सिर्फ महाराष्ट्र है, मुंबई के लिए मुंबई इज अ सब्सिडरी ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र होल्डिंग कंपनी हो गया, इंडिया अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी हो गया, एंड गुजरात इज फेलो सब्सिडियरी और कंपनी कंट्रोल्ड अंडर द सेम ग्रुप, है ना। जस्ट सेकंड। नेक्स्ट 3C, 3A covered 3 relationships, 3B covered 4 relationships. Total how many? 7 are covered. 7 + 2 9 हो जाएंगे। 3C में देखो किसका कवर किया है। अब तक हम सिर्फ कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे थे, अभी हम इंडिविजुअल्स पे आएंगे। इंडिविजुअल्स who own directly or indirectly an interest in the voting power of the company that gives them control or influence over the enterprise. So individuals having a control or influence over the company, promoter आएंगे इसके अंदर। Promoters have the control or influence over the company. कंट्रोल के लिए 50% था, इन्फ्लुएंस के लिए 20% था। बट इन्फ्लुएंस के लिए 20 से कम रहा तो भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। इन्फ्लुएंस इज टू बी जज्ड फ्रॉम फैक्ट्स and circumstances of the case. For you people, influence is a threshold of 20%. And control is a threshold of 50%. Control is a 50% threshold thing. And influence is 20%. समझा करे? And relatives of such individual. Relative का definition अलग है यहाँ पर। देखेंगे। कितने रिश्ते कवर है? 2। कौन कवर हुआ इसमें? इंडिविजुअल्स having a control or influence over the reporting enterprise and all the relatives of such individuals. All the relatives of such individuals. चक्कर आ रहा है? हो जा। गोली दूं? Listen up. मीनिंग ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव में कौन कौन कवर्ड है? स्पाउस, बीवी या मिया, सन डॉटर, कैन बी स्टेप सन स्टेप डॉटर ऑल्सो, ब्रदर सिस्टर। तो एक इंडिविजुअल है, उसकी बीवी कवर्ड हो गया, बीवी या हस्बैंड। सन डॉटर, सो यू गो 1 level डाउन। ब्रदर सिस्टर, यू टेक अ पैरेलल लेवल। ब्रदर सिस्टर वो मैरिड हुए या अनमैरिड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फादर मदर, सो यू गो 1 level अप।
फादर एंड व्हाट, मदर. कुछ समझा क्या? तो कहां कहां तक रिश्ते कवर्ड है? स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, सन डॉटर, खत्म. Who may be expected to influence or be influenced by that individual? They don't influence company, they influence individual, and that individual influences company in his or her dealing with the company. Auditor needs to apply judgment in deciding whether the relatives influence in dealing with the enterprise or not. See, all relatives are not covered. Only those relatives out of this list who have influence over the individual having influence over the company. कितने रिश्ते हो गए? 9 रिश्ते हो गए टोटल. 3A, holding company, subsidiary company and fellow subsidiary. 3B, associate, joint venture, investor in associate, investor in joint venture. 4 रिश्ते. 3C, individual having control or influence over the company and relatives of such individual having a significant influence over that individual when he deals with the company. His dealings with the company are affected by his relatives. So for example, let's assume a case like this. There is a promoter of a company aged 42 years. He has 4-year-old son. There is a promoter of a company aged 42 years. Promoter has 4-year-old son. Whether the 4-year-old son will be covered in the related party relationship. Son. Will the 4-year-old son be covered within related party relationship? How many say yes? How many say yes? Yes. How many say no? Correct answer is no. How will son, a 4-year-old, influence a 42-year-old, that too in dealing with the company? A son can influence a father while going to the park or asking for a chocolate or asking for some ride. How will a son who is a 4-year-old influence a decision of a 42-year-old when he deals with the company? थोड़ा बहुत रैशनल लगाओ ना. Moral of the story लिखाओ उधर. Every relative is not gonna be covered in the related party relationship. Every relative. Every relative is not covered within related party relationship. Para 3D देखो covers 2 relationships. Key management personnel and relatives of such personnel. Relative का definition same है. KMP are not necessarily they have a control or influence. They don't own the company. They may own the company, they may not. KMP are the persons who have authority and responsibility for planning, directing, controlling the activities of the company. So इसमें कौन कौन आएगा? MD, whole time directors, CEO, COO, CFO, etc. Like this, there can be different president. ऐसे अलग अलग नाम रह सकते हैं. Person in accordance with whose directions directors are used to act. मतलब कोई प्रोफेशनल एडवाइस देने वाला बंदा है, लाइक हिमालयन योगी इन केस ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. एक चित्रा रामकृष्णन करके सीईओ थी एनएससी की. शी यूज्ड टू टेक अ डिसीजंस ऑफ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ आवर कंट्री
largest by volume of derivatives in the world, on the advice of some Himalayan yogi, whether it was a lover or an extramarital affair or some hypothetical character, God only knows. I don't know. But it was an absurd thing. So, such Himalayan yogi will be called as key management personnel, because a person in accordance with whose directions directors are used to act or a CEO is used to act. But remember, you are a chartered accountant. You also give advice to the company's CEO, directors, and etc. You are not going to be covered in the definition of KMP. You are not going to be covered in the definition of what? Judgment is involved in defining KMP. Substance is important rather than the form. Mere title does not make him a KMP. He must be able to take a decisions. ASI 21, ASI is Accounting Standard Interpretation. क्या बोला मैंने word? Accounting Standard Interpretation. Government ICA ने बोला है. Whether a non-executive director on the board of directors will be KMP? Because he is not involved in day-to-day decisions. Answer to that is, he will not be considered as a KMP by virtue of AS 18, because he is just a director, unless he has authority and responsibility for planning, directing or controlling. Normally he doesn't have authority for planning, directing and controlling. Number 2, whether a non-executive director covered by AS 18, in case he participates in financial decision, then yes. Why? No, he is not participating exclusively. The requirements of AS 18 should not be applied in respect of non-executive, even if he participates in the decision, unless he falls in any of the categories of para 3. So ICI ने by default बोला है non-executive director is not covered in the related party, क्योंकि he will participate in decision making because of the legal requirement, but he is not the one who is involved in execution. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डे टू डे काम में नहीं आ सकता, वो सिर्फ बोर्ड मीटिंग को आता है, उसका गाइडेंस देता है, बस बात खत्म. कितने रिश्ते हो गए? 11. एएसआई इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको लिखो एएसआई 21, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉट कवर्ड इन आरपीपी, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, आरपीआर. Non-executive director is not covered in the definition of what? RPR. और है ASI 23, important questions. Whether remuneration paid to KMP is a related party transaction? Obviously yes. Remuneration is related to all transactions. All transactions. कौन घटिया है रे? सर मुझे एक सिली डाउट है, तेरा सच में नाम क्या है? नरूटो उजुमाकी, इज इट अ करेक्ट नेम? क्या ये एनिमेशन का नाम है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव वन सिली डाउट, व्हाट इज योर जेन्युइन नेम? नरूटो उजुमाकी, व्हाट इज योर करेक्ट नेम? You tell me your correct name, I will tell you your answer. So, listen up carefully. Remuneration to the non-executive director is gonna be covered within the related party transaction. Dividend paid to key management personnel, is it required to be disclosed? Yes. Transaction क्या nature का है वो छोड़ दो. All transactions with related party relationships are to be disclosed. Whether remuneration paid to non-executive director is related party, no, क्योंकि non-executive director ही related party relationship में covered नहीं है. Last clause, para 3E, residuary clause. Enterprises over which any person
described in the class C. This is important. Enterprises on which any person described in class C. Class C में कौन था? Individuals, basically promoter था class C में, promoter and his relatives. And clause D was about KMP. Is able to exercise significant influence. Now take a pause. ये क्या है? Big Limited. It has a promoter Mr. A. Mr. A owns 30% of X Limited. X Limited is a related party of Big Limited. आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि X और Big का जब ट्रांजैक्शन होगा तो मिस्टर A उसको इन्फ्लुएंस करेगा, बिकॉज A बिग को भी कंट्रोल करता है और X को भी कंट्रोल करता है. So these are basically enterprises over which promoter has a control. अगर अपने लॉ का सेक्शन 102 ठीक से पढ़ा होगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वाला, तो उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको ये लिखना पड़ता है विच ऑल अदर एंटरप्राइजेस directors are interested. If any item of agenda involves an enterprise in which directors are interested, you need to make a disclosure. So enterprises owned by the director or a major shareholder of the reporting enterprise and enterprises that have member of key management in common. Summary of para 3. 12 रिश्ते देखे हमने. पैरा 3A इसमें क्या कवर्ड था? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, फेलो सब्सिडियरी कंपनी, associate, joint venture, investor of associate and investor of. Para 3C was about promoter and his relatives. Para 3D is KMP and his relatives. Para 3E is enterprises, business enterprises over which person mentioned in the 3C or 3D has a control. Has important points. Associate में indirect control possible नहीं है. Indirect 3B does not cover indirect control. 3B covers only direct control. Number 1. Number 2, every relative is not going to be covered within related party relationship. Only those relatives who can influence the individual while dealing with company are gonna be covered. ये था पैरा 3. उसने 12 रिश्ते कवर किए. इन 12 में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कवर्ड नहीं था. And person giving advice in a professional capacity is also not covered. But there are few more exclusions. क्या बोले मैंने? Few more exclusions. These 3 relationships are specifically excluded from AS 18. देखो, common KMP. देखो अभी क्या होता? पैरा 3E में क्या था? एक KMP है, MD है, MD of A Limited controls A. He is also MD of B Limited. One person can be MD of 2 companies. Just because the 2 companies have one common MD does not mean these 2 companies become related parties. Para 3 में covered है. 3E talked about what? Enterprises influenced by individual and a KMP mentioned in the 3C 3D. 3A capital है. Exclude करता है. 2 companies are not related parties simply because they have director in common. Notwithstanding para 3D or 3E above. Even if it is written in 3D 3E, 3A excludes it. Just a common director is not enough. What is required? He must be able to exercise a influence. Unless the common director is able to affect the policies of both the companies in their mutual dealings. Unless mutual dealings में वो involved है. If dealings of both the companies can be affected by common director,
then the two companies will be related party. But just because you are common director, the fact that you are common director does not make you related party. What will make you a related party? That common director is the one which influences your mutual dealings. If he doesn't have influence on the mutual dealings, he will not be, those two entities will not be called as related parties. Are you clear with the first exclusion? Second exclusion is a wonderful one, dependence on one of the party. Like almost 80% of your raw material is coming from one of the party only. Or 80% of your sales are to one party. Just because all of your sales or all of your purchases or a large chunk of sales or purchase are from one party, does not make that party a related party. क्यों? Significant influence हो सकता है ना? Significant influence के लिए ownership चाहिए, ऐसा mandatory नहीं था. If you are selling 80% to somebody, that somebody might dictate terms and conditions to you. But just because you sell 80% to somebody does not make that somebody to be your related party. Unless he is able to use that relationship to influence you. A single customer or a supplier or a franchisee or a distributor or a general agent with whom enterprise has a significant volume of business cannot be said to be the related party merely by virtue of economic dependence. Just because they are economically dependent, economic dependence is not the criteria defined for a related party. That economic dependence must result into participation in operating / financial decisions. They should be able to decide the price at which you are selling. They should be able to decide where you make an investment, where you don't make an investment. They should be able to decide your capital allocation. They are able to decide a lot of things. Just because you sell 80% to somebody does not mean they can decide. Let's say just because my entire income comes from you people does not mean you will decide what I do in my life. Understood, na? क्या बोले? Business supporters, same point है. The parties listed below in the normal course of business will not be related parties unless they exercise influence. Persons who give you loan, trade unions, electricity companies. क्यों? उन्होंने electricity नहीं दिया तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो. So does not make electricity company a related party. Government departments or government agencies. खत्म. अभी disclosures पे आएंगे. Last part. Part 4 is the last part. Disclosures क्या क्या करने हैं, उसका फॉर्मेट ऑफ डिस्क्लोजर है और रियल लाइफ के मैंने एक दो एग्जांपल दिए. सुन लेना अब बच्चों, समरी देखो. अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने ये सीखा कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप होना जरूरी है. वो रिलेशनशिप कहां पे लिखा रहता है? पैरा 3A टू पैरा 3E एंड इट मस्ट नॉट बी एक्सक्लूडेड इन कैपिटल 3A. 3A to 3E covered 12 relationships. 3A excluded 3. Which 3? Common KMP. Number 2, dependence, economic dependence on single party. And number 3, supporters. ये सारे लोग related party relationship में नहीं आएंगे even if you are economically dependent on them. Are you clear? So, once you are covered in 3A to 3E and you are not excluded from 3A capital, you have to make a disclosure. Disclosure of names of the parties and transactions carried out with them and closing balances with them. Closing balance matlab at the end of the year you might have some money receivable, some money payable, some loans given, some advances given, because you might try to run the money from here and there. Please remember, related party relationships are used large extent for the purpose of manipulation. I told you at the beginning of the chapter. और ये इंडियन फैमिली बिजनेसेस में बहुत ज्यादा होता है. यू मस्ट आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस वेयर promoters try to take the money out of the company and put it in the hands of the firms they control or relatives they have.
and that results into loss to minority investors. Minority age के हिसाब से नहीं. If 60% of the company is controlled by promoter, rest 40% is called as minority. तो बहुत सारे कंपनीज में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का ख्याल नहीं रखा जाता है. Let me give a classic example. Person is a great person, but I don't know what happened to him. He's a shrewd person, shrewd businessman. I don't know whether he has Indian citizenship now. If he had, he must be in top 5 richest Indians. How many of you know this person and what he did in COVID? Anil Agarwal. Vedanta. Vedanta shares were trading in the market at 70 to 80 rupees per share. Less than 70 actually. And this fellow announced a program to delist Vedanta by buying all the shares from other shareholders, minority shareholders. सारे के सारे शेयर 63, 64 पे चल रहा था. उसने तो मैं 80 पे शेयर खरीदता हूं तुम्हारा. I will buy shares at 80, which is almost 25% more than the current market price. Everyone got happy. One chartered accountant stopped him. Anil Singhvi. जी बिजनेस पे उन्होंने कुल्लम कुल्ला बोल दिया इन्वेस्टर्स को, इसका शेयर बेचना मत, कुछ भी हो. वेदांता का शेयर का फेयर प्राइस बहुत ज्यादा है. अभी उनको समझ में आया कि इसका फेयर प्राइस नीचे आ जाएगा कोविड की वजह से, बट देयर विल बी रैली इन द मेटल्स बेसिकली बिकॉज कभी भी जब कभी रिमेंबर देयर इज अ ह्यूज इकोनॉमिक रिसेशन एंड मेटल कंपनीज आर ट्रेडिंग बिलो देयर हिस्टोरिक वैल्यूएशन. आंख बंद करके मेटल एंड माइनिंग कंपनीज को खरीदना if they are trading below historic valuations. So historic valuations you can find out how a respective metal company, हर एक अभी स्टील वाला है तो उसका वैल्यूएशन अलग होता है, पर टन वैल्यूएशन होता है, कैपेसिटी इनटू पर टन अमाउंट रहता है. सो स्टील का अलग रहेगा, कॉपर वाले का अलग रहेगा, जिंक का अलग रहेगा. तो ऐसे अलग अलग कंपनीज होती है, अलग अलग उनका वैल्यूएशन का मेट्रिक होता है. यू फाइंड आउट अ वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी एंड इफ दैट ट्रेडिंग एट अ बिलो द मार्केट फेयर प्राइस, आंख बंद करके उठाने का. क्यों? रिसेशन से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च करने होते हैं और इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में मेटल्स का बहुत ज्यादा जरूरत होता है. समझा क्या? तो वेदांता ने ये किया था. क्यों? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का उसने ख्याल नहीं रखा. अनिल अग्रवाल इज अ ग्रेट पर्सन बट इज डन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चैरिटी, कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. यू शुड रीड अबाउट हिम. टिपिकल बिहारी फेलो, कम फ्रॉम मतलब देहाती फेलो, बट जो लेवल पे वो रीच किया है is unimaginable. He was not doing a fraud, he was just a clever businessman. क्या बोले सर, वो अनिल सिंह जी से तो बहुत गुस्सा हो गए होगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. क्यों? वो मैच्योरिटी उतना रखता है, वो आदमी उतना आदमी मैच्योरिटी रखता है. वो तो उसका भी मालूम था कि वो जो कर रहा है वो बिजनेस वाइज बहुत श्रूड डिसीजन है. किसी ने रोका उसको? आज भी बात करते दोनों, और हमसे बात करते. क्यों? सामने वाला बीजेपी कांग्रेस वाला जैसा नहीं ना, इंटेलेक्चुअल्स है ना दोनों लेवल पे. तो इंटेलेक्चुअल्स होते तो वो तुमने क्या कहा, ये कहा, वो नहीं देखते. इशू सही था गलत था वो देखते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेदर माइनॉरिटी इज प्रोटेक्टेड इन अ कंपनी और नॉट. इफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मी investing in a PSU companies is government does not look for other shareholders when they take a decisions. Government takes a decision which benefits them or which helps vote bank. PSU कंपनीज में बहुत बार गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लेता है, लाइक किसी के बाप ने IDBI बैंक नहीं खरीदा होता, LIC ने खरीदा. क्यों? फाइनेंस मिनिस्ट्री से फोन गया होगा, बेटा खरीद ले. पैसा किसका था? पॉलिसी होल्डर्स का. Now you are not looking at interests of the shareholders, you are looking at your own interest as a politician. No bank would have given the loan to Kingfisher against brand Kingfisher. IDBI, SBI gave thousands of crores. Against what? Brand name.
आई अंडरस्टैंड इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू होता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट ब्रांड नेम गोइंग टू बी सेलेबल इफ there is a default by that company. Today, if somebody wants to launch an airline in the name of Kingfisher Airline, even if you give Kingfisher brand free, he will not take it. There's a negative goodwill to it. And our IDBI and SBI and other public sector banks valued it like anything and gave the loan. Which rational person would have given it, but government at that point of time gave it. Government at that point of time gave it, ना कुछ नहीं कर सकते आप उसको. So look at disclosures. Remember, AS 18 requires disclosure of related party transactions and not the impact of transaction on financial statement. ये ट्रांजैक्शन की वजह से आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये नहीं बोलना है आपको. आपको सिर्फ बोलना है हमने इस पार्टी के साथ ये ट्रांजैक्शंस किए और इसका ये बैलेंस है. बात खत्म. Related party transactions is a transfer of resources or obligations between the parties, regardless of whether the price is charged or not. It can be purchase of goods, sale of goods, fixed asset, services, agency agreement, hire purchase leasing transactions, transfer of R&D, licensing, fund provided by a company to another company, guarantee given, management contracts. बहुत सारे contracts हो सकते हैं. Generals Limited argues that it does not charge any price in respect of services shared with the related parties and hence it is not required to be disclosed. Is the argument correct? No. Moment you do a transaction, whether you charged money for it or you did not charge the money for it, you have to make a disclosure so that at least government understands. What are the disclosures? Look at the final part, disclosures given by AS 18. जैसे हमने आज AS 17 के disclosures किए थे, प्राइमरी सेगमेंट और सेकेंडरी सेगमेंट के लिए, तो वैसे यहां पर भी है. ये चीजें अगर आप कल के कल रिवाइज करोगे चारों स्टैंडर्ड को, तो फ्रेश है तो दिमाग में जल्दी फिट हो जाएगी. तो मैं आपको AS 20 का समरी मुझे कोई भाई साहब या बहन जी ने भेजा था, ने तो भेजा था मुझे. I'll just share it. कुछ तो है. So मैं आपको 2-3 शेयर कर रहा हूं. ये अच्छा कलरफुल है. पहला एक शेयर किया मैंने अभी आपको. टू शेयर इट इज. तो आप कल के कल प्लीज रिवाइज करना. सर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करो ना. मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू मैनेज. मतलब मैं बोलता हूं तुम्हारा पूरे मेरे बिजनेस का मैनेजमेंट तू देखेगा, उसके लिए 10% तेरे को पे करूंगा मैं, प्रॉफिट का या सेल्स का. मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट आया क्या आपके ग्रुप पे? क्या माती खा रहा है टेलीग्राम. आ जाएगा. सो लुक एट द डिस्क्लोजर्स बाय AS 18. AS 18 के डिस्क्लोजर्स देखना. और ये दूसरे का तो हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन देख के मैं डर रहा हूं. ये तो स्कूल में ही है. भेज दिया, कौन है मालूम नहीं. सो डिस्क्लोजर्स, 2 मैंने आंसर शेयर किए, आप आपके खुद की समरी बना सकते हो. डिस्क्लोजर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय AS 18 वेयर देर आर नो ट्रांजैक्शंस विथ रिलेटेड पार्टीज. क्या बोला मैंने? ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ. किसके साथ? रिलेटेड पार्टी के साथ. तो क्या करोगे आप? क्या क्या डिस्क्लोज करोगे? तभी भी आपको नेम ऑफ द पार्टी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप अगर कंट्रोल होता है तभी रिलेशन, मतलब रिलेशनशिप क्या है, होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, तो नेम बताओ उनके साथ क्या रिश्ता है. नेचर ऑफ रिलेशनशिप इज नॉट रिक्वायर्ड इफ इंफ्लुएंस एग्जिस्ट. नेम ऑफ द नेचर ऑफ रिलेशनशिप कब लगता है? इफ देर इज अ सिग्निफिकेंट, इफ देर इज अ कंट्रोल. तो बच्चों ट्रांजैक्शंस हुए ही नहीं तो कितना चीज डिस्कस करना है? 2 ही चीज डिस्कस करना है, नाम और रिश्ता. When the transactions take place, तब थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन देना है.
देखो, ट्रांजैक्शन हो गया आपका रिलेटेड पार्टी के साथ, क्या क्या डिस्क्लोज करोगे? नेम ऑफ द पार्टी, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप, नाम क्या है, रिश्ता क्या टाइप का है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन, क्या ट्रांजैक्शंस किए उनका डिस्क्रिप्शन, परचेज, सेल, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट, license fees contract, whatever type of contract, whatever transaction you did, volume of transactions as an amount or proportion of total business, what is a percentage जो transaction आपने related party के साथ किया as a percentage of total business, how much is it? Outstanding balance, मैंने आपको बोला था balance आपको दिखाना पड़ेगा. Provision for doubtful debt relating to such parties, क्यों? If you are making a provision for doubtful debt relating to related party, it's a big red flag. Why red flag? आपने रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन किया और उसके ऊपर आप लॉस के लिए प्रोविजन कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ थी. अमाउंट रिटर्न ऑफ ऑलरेडी, एनी अदर एलिमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन दैट इज नेसेसरी, क्या क्या डिस्क्लोज किया? नेम ऑफ द पार्टी, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप, description of transactions, nature of transaction, and the percentage of transactions carried out with the related party as a percentage of total. Outstanding balance दिखाया आपने, provision कितना किया, कितने bad debts आपने write off किए, and any other matter that requires to be disclosed. क्या फॉर्मेट में डिस्क्लोज करोगे? एक इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट दिया है गवर्नमेंट ने और एक थ्रेशोल्ड भी दिया है, कब डिस्क्लोज करना चाहिए. उधर थ्रेशोल्ड मैंने नीचे, हाँ एक पहले ये थ्रेशोल्ड पे आओ, 10% का थ्रेशोल्ड इधर. Materiality primarily depends on the facts of the case. Materiality basis of the size. Generally, a related party transaction, the amount of which is in excess of 10% of total related party transaction of the same type should be considered material. मतलब आपने रिलेटेड पार्टी से गुड्स परचेस किए, परचेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी इज 10% ऑफ टोटल परचेसेस बाय यू, देन इट इज मटेरियल. अलग से डिस्क्लोजर जरूरी है. मटेरियलिटी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कभी कभी परसेंटेज रिलेवेंट नहीं, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज. कभी कभी ट्रांजैक्शन का नेचर ही इतना इंपॉर्टेंट होता है, लाइक यू हैव गिवन अ लोन टू रिलेटेड पार्टी, इट माइट नॉट बी मोर देन द 10% ऑफ लोन्स गिवन, बट वो रिलेटेड पार्टी का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब था, तभी भी तुमने जाके लोन दिया. कंसीडरिंग nature of the transaction, it should be disclosed. Why would anybody give a loan to a bankrupt or a financially troubled person? You gave a loan to a troubled person or a financially troubled person. Why? You need to disclose it. आ जाओ ऊपर. Format. Items of similar nature may be disclosed together. मतलब purchase of goods together दिखाओ. Don't show material by material. Hence, purchase or sale of goods are not aggregated with purchase or sale of asset. वो separate है. Purchase of goods अलग दिखाओ, purchase of asset अलग दिखाओ. Exception, aggregation is not done when separate disclosure is necessary. Illustrative format देखो, देखो serial number, purchase of goods, होल्डिंग कंपनी से कितना परचेस किया, सब्सिडरी से कितना परचेस किया, फेलो सब्सिडरी से कितना किया, एसोसिएट, केएमपी, रिलेटिव. फॉर एग्जांपल है ये. प्रीवियस ईयर कंपैरेटिव फिगर शुड आल्सो बी डिस्क्लोज. तो ये क्या है रे? व्हाट आर दीज? दीज आर ट्रांजैक्शंस एंड हाउ मच डिड यू परचेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव रिलेटेड पार्टी. और उनके नाम किधर है? नाम है ना इधर, ए बी सी डी. Disclosures are required only if it is material. Materiality का क्राइटेरिया समझा तुमको? कभी कभी ये डिस्क्लोजर कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करता है, then do not make a disclosure. You might have agreement, like in case of a bank, when you give a loan to a customer who is a related party, आपने उस पार्टी को लोन दिया है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी के अगेंस्ट है. बैंक कभी भी खुद होके नहीं बोलता है हमने इसको लोन दिया और ये लोन बैड डेट हो गया. फिर कौन बोलता है? मीडिया. अब बोल तो मीडिया को कहां से पता चलता है? एमसीए. एमसीए के वेबसाइट पे जाके कौन से कंपनी ने कौन से बैंक से कितना लोन लिया है, ये 2 मिनट में समझता है.
कहां से? registration of charge that happens under section 77. There is a document that is required to be given to MCA. तो MCA के वेबसाइट पे जाके आप कंपनी का एक रजिस्टर रखना पड़ता है। कंपनी को भी रजिस्टर रखना पड़ता है, आरओसी को भी एक रजिस्टर रखना पड़ता है। वहां से जाके चेक कर सकते हैं। बैंक्स डू नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द पर्सन्स टू हुम दे आर गिवन अ लोन, बट रिमेंबर if that day I had asked a question, क्या नाम था उस कंपनी का? जेपी इंफ्राटेक या कुछ तो नाम था, जेपी एसोसिएट्स या कुछ तो था, एक कंपनी था, उसने लोन का डिफॉल्ट किया था 8-10 हजार करोड़ का। बहुत सारे बैंक से उसने लोन लिया था, जयप्रकाश एसोसिएट। वो बैंक्स मीडिया ने रिपोर्ट किए थे। बैंक खुद कभी नहीं बोलेगा हमने जयप्रकाश एसोसिएट को लोन दिया, कॉन्फिडेंशियलिटी के अगेंस्ट है। फिर मीडिया ने बोला था कि इन बैंक्स का एक्सपोजर है जयप्रकाश एसोसिएट्स को। मैंने पूछा था क्या इम्पैक्ट होगा इस न्यूज का? मेजॉरिटी ऑफ यू सेड वो जो बैंक्स के शेयर्स है वो नीचे आएंगे, बैंक निफ्टी नीचे आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि बैंक्स ने उसके लिए ऑलरेडी प्रोविजन करके रखा था। रियल लाइफ के डिस्क्लोजर्स देखो। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज एक कंपनी है, उसने पहले नाम दिया, लोगों के नाम देने हैं, रिश्ता, नाम, नेम ऑफ पर्संस, नेचर ऑफ रिलेशनशिप। देखो इधर लिखा है सुधा सुरेश, हिरेन शाह, दीपक खेतान, संजीव, ये सारे लोग कौन है? केएमपीज है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप लिखा, नाम लिखा, उनका पोजीशन लिखा। एंटरप्राइजेस ओवर विच केएमपी हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, परिणम फाउंडेशन, उज्जीवन सोशल फाउंडेशन, ये एंटरप्राइजेस है जिनके ऊपर केएमपी हैव इन्फ्लुएंस। सब्सिडरी कंपनी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ट्रांजैक्शंस, रेम्यूनरेशन, समित घोष को तो रेम्यूनरेशन दिया, ये ट्रांजैक्शन का नेचर हो गया, किसके साथ किया और क्या नेचर का ट्रांजैक्शन है। अमाउंट दे दिया। सुधा सुरेश, सैलरी कितना दिया, परक्विजिट्स कितने दिए। फिर संजीव, इसको कितना दिया, किसको कितना दिया, परिमन फाउंडेशन के साथ क्या हुआ, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन किए, इन्वेस्टमेंट किया तुमने, प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट किया, इंटरेस्ट इनकम उसके साथ ट्रांजैक्शन किया, अमाउंट रिसीव्ड हो गया, अमाउंट पेड हो गया, मतलब वॉट एवर ट्रांजेक्शन यू डिड विथ रिलेटेड, और आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस भी दिखाने पड़ेंगे आपको, क्लोजिंग बैलेंसेस भी दिखाने पड़ेंगे ना। कुछ समझा क्या? That's it on AS18. Are you clear with the concepts? Broadly क्या करोगे? On your screen, AS18, para 3A to 3E, RPR, 12 relationships. समझा ना? para 3A, 3 capital A, exclusion of 3 relationships and disclosures. बनाओ ये चार्ट। इतना चार्ट बना के रखना कभी तो, इतना ही लिखो खुद अभी। अरे सिर्फ नाम, पूरा डिटेल लिखने, नाम लिखने का, चार्ट तुम बाद में समरी बनाओ, लेकिन तुमको तो याद रहना चाहिए कौन से 3 एरिया है। चलो चौथा एरिया तुमको ऐड करना है, तो पहले रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन, वो लेकिन कुछ काम का नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया था? रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन किया, लेकिन वो डेफिनेशन का आगे कुछ यूज ही नहीं है, क्योंकि डिस्क्लोजर किसके लिए लगता है? आरपीआर के लिए, आरपी के लिए नहीं। डिस्क्लोजर्स आर फॉर आरपीआर, नॉट फॉर आरपी। सबसे पहले हमने आरपी देखा था, रिलेटेड पार्टी विच हैज कंट्रोल और इंफ्लुएंस। देन वी टॉक्ड अबाउट आरपीआर, देन वी टॉक्ड अबाउट exclusions, and finally we talked about disclosures. एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे इसके ऊपर। ये इजी वाला स्टैंडर्ड से, जहां पर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आता है। तो आपने ये 17-18 आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? देखा क्या आपने इंडेक्स? तुमने अगर इंडेक्स देखा होगा, मार्क्स का इंडेक्स जो अपना स्टेटमेंट है ना, उधर हमने कुछ मेरिट रैंकर्स के नाम वगैरह नहीं लिखे। देखो जरा,
लिखने चाहिए हमने। देखो, तुमने अगर देखा होगा A17 मई 22 में आया था, हमने एक क्वेश्चन देखा था उसका, और A18 का तो पूरा का पूरा चांस है आने का। क्यों? सूखा पड़ा है 3 अटेम्प्ट से। A18 3 अटेम्प्ट से सूखा पड़ा है। AS24 का आने का प्रोबेबिलिटी है, वो भी 3 अटेम्प्ट से सूखा पड़ा है। देखा क्या? चलो अभी हम क्या करते हैं, एग्जाम के क्वेश्चंस पहले करते हैं जो 2-3 आए हैं। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव नेचर के रहते हैं। रिसेंट एग्जाम क्वेश्चंस देखो। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर डिस्क्लोज्ड on 31st March 2018. Mr. Sumit, relative of MD, received a remuneration of 2,10,000 for his services in the company from 1st April to 30 June. He left the service on 1st July. Should the relative be identified as a related party on closing date? Answer is yes. Why? Relationship might exist at any point of time. वो था उधर एक जगह पे आया था, किधर तो पेज नंबर आई डोंट नो। रिलेशनशिप माइट बी देयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। रिलेटिव ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज कवर्ड इन द पैरा 3D। आपको पॉइंटर्स क्या लिखने हैं थ्योरी क्वेश्चन के लिए? रिलेशनशिप इज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड ऑन बैलेंस शीट डेट। रिलेशनशिप माइट एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे? सेकंड पॉइंट इज दिस रिलेशनशिप इज कवर्ड इन द पैरा 3D। समझा? दिस रिलेशनशिप इज कवर्ड इन द पैरा 3D। 3D में क्या कवर्ड है? KMPs एंड रिलेटिव्स ऑफ KMP। समझा क्या? इफ आई सी आंसर इज डिफरेंट लेट मी नो। गुड सोल्ड अमाउंटिंग टू 50 लाख टू एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कहां पे जाएगा? 3B। ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड 30 जून। After that, related party relationship ceased to exist. However, goods are supplied as was supplied to any other ordinary party. Still, disclosure is required. Disclosure of all transactions are required, whether the price charged is favorable or unfavorable to the company. The moment you carry out a transaction with the related party relationship given in the para 3A to 3E, you need a disclosure. Decide whether the transactions of the entire year have to be disclosed. No. Transactions of only the period during which the relationship was there are to be disclosed. एंटायर सी पहले केस में तो इंटायर ईयर का ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, 1 जुलाई को जॉब छोड़ के गया। और इधर हाँ सेकंड पार्ट में रिलेशनशिप सीज टू एग्जिस्ट ऑन व्हाट डेट? 30 जून। अब बोले कैसे? शेयर होल्डिंग कम हो गया होगा, एसोसिएट नहीं रहा होगा। तो ट्रांजैक्शन किसके डिस्क्लोज करने? पूरे ईयर के या सिर्फ 3 महीने के? 3 महीने के। Transactions are required to be disclosed only for the period for which relationship existed. I don't know the answers of beloved ICA. फर्स्ट वाला, सेकंड वाले में क्या दिया उन्होंने? दिमाग मत लगा तो इधर दे, दे इधर फोन दे। मेरे को ग्लास भी दो। क्या बोले? First part is the same answer. Second part is also same. Same answer दिया है. Initial answer is same. English में लिखा है सिर्फ.
Identify. Oh, identify related parties. Wait a minute. Identify related party. Relationship नहीं बोला. First part of the chapter. क्या था? Control and significant influence. Maya holds 61% shares of Sheetal. Sheetal holds 51% shares of Fair. Fair Care? Care holds 49% of Fair. Okay, okay. पहले ड्रॉ करने दो. Maya 61% of Sheetal. Fair. Sheetal owns 51% and there is a Care. Care owns remaining. Give your answer reporting entity wise for Maya, for Sheetal, for Care and for Fair. Oh, ये गधा है. He does not want related parties. He want related party relationship only. वो मुंबई महाराष्ट्र का क्वेश्चन जो मैंने बोला था ना, वही क्वेश्चन है ये. माया के लिए कौन कौन रिलेटेड पार्टी में आएगा? सब्सिडियरी शीतल, सब्सिडरी का सब्सिडरी फेयर. दैट्स इट. माया के लिए उतना ही आएगा. फिर शीतल, शीतल के लिए फेयर आएगा पहले और होल्डिंग कंपनी में माया आएगा. हाँ है ना. केयर के लिए सिर्फ फेयर आएगा. फेयर के लिए शीतल, माया, केयर. समझा करे? Subhash Kumar is a MD of A and he also holds 72% of B. So A Limited के लिए कौन है? होपफुली कल ठीक हो जाऊंगा. मंडे को लेक्चर रेगुलर है, मरूंगा नहीं कल. सो सुभाष कुमार is MD of A, holds 72% of B. So for A, who is related party? Subhash, and Subhash is MD of A and B also. Bouncer. Subhash is covered in para 3D and B Limited will be covered in 3E. 3E was talking about enterprises being controlled by promoter or KMP. Subhash will be covered in the 3D and B will be covered in 3E. Arey. Next. Khushi Limited entered into agreement with Happy for running a business for a fixed amount payable to her latter every year. Management contract. Contract says that day-to-day management of the business will be handled by Mr. Happy, while all financial and operating policy decisions are taken by the board of directors. Mr. Happy does not have any voting power of Khushi. Question क्या है? You are required to suggest how about transactions will be treated. बच्चों, transactions of Khushi with Mr. Happy will not be covered in the related party relationship. Why? Mr. Happy does not have a control over the operating oblique financial policy. Decisions कौन ले रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले रहे हैं. प्लस मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो था, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन ये हो सकता है जस्ट बिकॉज देयर इज अ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट. सर, वुडंट दिस बी पार्ट ऑफ एक्सक्लूजन बिकॉज ही इज अ एमडी? सी 72%. सी वो क्या बोल रहा है? ये कॉमन केएमपी है. दो कंपनीज में कॉमन केएमपी है. कौन से? वो सुभाष वाला जो क्वेश्चन था. सुभाष is a common key managerial personnel between A Limited and B Limited. So question is,
कैन वी अप्लाई दैट एक्सक्लूजन? सी सुभाष इज कंट्रोलिंग, कहीं लिखा नहीं क्वेश्चन में कि सुभाष इन्फ्लुएंसेस ए एंड बी, यू कैन एक्सक्लूड. तो बी विल नॉट बी कवर्ड. बी विल नॉट बी कवर्ड. आई डोंट नो व्हाट आईसी हैज गिवन. प्लीज अंडरस्टैंड, ए लिमिटेड का एमडी कौन है? सुभाष. सो सुभाष विल बी कवर्ड इन 3D. सुभाष owns 72% of B. So Subhash is a common key managerial personnel. नहीं, ये नहीं लिखा है कि he is a KMP of B. He is MD of B. ऐसा कहां पे लिखा है? He has a control. Just a second. Please shut your mouth. मैंने जो पहले आंसर दिया था वही लिया. उन्होंने एक्सेप्शन अप्लाई नहीं किया है. क्यों? एक्सेप्शन कब अप्लाई होता है? देखो, टू कंपनीज में कॉमन केएमपी होना चाहिए. सुभाष इज नॉट एमडी ऑफ बी. सुभाष ओन्स 72% of B. So for A, who are related parties? Subhash as well as B. ये आंसर्स आपने पढ़ने चाहिए. और क्या करना है ना, प्रेफरेबली ये सारे आंसर्स को नोटबुक में लिखो. पूरा आंसर नहीं लिखने का. क्वेश्चन नंबर एंड मेन पॉइंटर्स. कौन से चैप्टर्स के लिए? AS4, AS17 एंड AS18. AS20 के लिए तो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व ही कर लिए. 20 न्यूमेरिकल था. 4, 18 एंड 4, 17 एंड 18. इन तीनों को आप क्या करो, आंसर्स मैंने 4 के शेयर किए आपके ग्रुप पे, 17 भी मैंने शेयर किया आपके ग्रुप पे. डिड आई? चेक करो, शेयर किया मैंने 4 एंड 17. यस, आई शेयर्ड टुडे ओनली. चेक करो गदो, दिख रहा है. ज्वाइन बैक लिखा है उसके पहले. चैप्टर 18 AS4, चैप्टर 24 AS17, और उसके नीचे समरी शेयर किए बच्चों वाले. एक समरी 2 बार आया है, समझा गया? या उधर ग्रुप पे जाके फाइल्स पे देखना. आज ही मैंने दोनों शेयर किए. अब मैं कौन सा शेयर कर रहा हूं तुमको? AS18 भी शेयर करके रखता हूं. तो आप तीनों स्टैंडर्ड्स कल खत्म करना, उसके बिना मत सोना. नहीं, ये सेटिंग कर. ये नेक्स्ट, श्री भानु, रिलेटिव ऑफ KMP. See, happy will not be a related party relationship. Huh? Happy does not have right to control the policy decisions. Happy does not control policy decisions. Banu is a relative of KMP. Received a remuneration of 3.5 lakh for his services in the company for the period from what date? 1st of April to 30 June. 1st July he left the service. हाँ, it will be reported for that quarter. Same transaction है यार. ऊपर जो था ना, ऊपर. नेक्स्ट, ये QRM के आंसर्स तो आपके पास रहेंगे. You'll have all QRM answers with you. P सीरीज के क्वेश्चंस देखते चलो ओरली फटाफट. 19 नंबर से शुरू करते उल्टा. P Limited has 60% voting in Q. Q has 20% right in R. Also, P directly enjoys 14% of R. R is a listed company and regularly supplies goods to P. Management of R has not disclosed relationship with P. How would you assess the situation? It is related party relationship. कैसे? नहीं. Oh no, associate should be direct.
P owns Q, आवाज देखो इनका साला को, P owns Q 60% and Q in turn owns R का 20% and P directly owns, so you can't say 14 plus 20. Q associate के definition के लिए direct, अब हो गया debatable matter. Q associate significant influence can be there even without 20%, but आप criteria लगाओ, since P directly controls only 14%, R is not a associate or P is not an investor in associate, only direct control is required. So P and R are not related party. Are not related party. Logic लिखो उधर. Logic. For associate, direct control is required. For associate, direct control is required. Direct control है क्या यहाँ पर? नहीं है. इन क्वेश्चंस का अच्छा मैं नीचे आर वाले क्वेश्चन करता हूँ क्योंकि आर का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने का, कि फाइनल के ऊपर के. Is remuneration paid to the board of director related to party transaction? Yes. R2. Sun Limited sold goods to 50 lakh to Moon during a financial year at a normal selling price, followed by Sun. The MD of Sun holds 75% shares of Moon, so he is a common, but common KMP नहीं है. The chief accountant of Sun contends that the sales are not required to be different treatment from the other sales made by company, and hence no disclosure is required. Chief accountant correct? No. You need to make a disclosures. Why? The moment you meet the relate para 3E, this will get covered in the para 3E. Why? Sun का MD कौन है? MD of Sun controls 75% of Moon. That's why Sun and Moon are related parties under para 3E. Exclusion कब आता है? अगर common KMP है. जो MD है वो common KMP नहीं है. MD is not a KMP in the other company. MD is owning 75% stake. The exclusions कब है? देखो, two companies are not related parties simply because they have director in common. Right now Sun and Moon के बीच में director common नहीं है. Director सिर्फ Sun में ही है. वो director Moon में 75% own कर रहा है. So director of Sun is a KMP covered in 3D. Enterprises which KMP controls is covered in 3E. So exclusion में आएगा क्या? नहीं. तो कंटेंशन जो है वो करेक्ट है कि आपने सेम प्राइस पे बेचा है, उसको कोई डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई फेवर नहीं किया है. तुम फेवर किए हैं या नहीं किए वो रिलेवेंट नहीं है. क्या रिलेवेंट है? तुमने रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप रखा है और वो रिलेशनशिप के तहत आपने ट्रांजैक्शन किया है. SP Hotels enters into agreement with A for running a hotel for a fixed rent. Same question है. Day to day management. Happy वाला question. Same as what? Q3. On the basis of provisions of AS 18, identify related party in the following cases. X holds 60% of Y. Y holds 55% of W. X 60% of Y. समझा करे? Y owns 55% of W. Z holds 35% of W. कर सकते हैं यार तुम लोग, कुछ भी ग्रेट नहीं है. हिमालय सोल्ड गुड्स ऑफ 42 अरावली MD कॉमन सेम हो गया. ओमेगा लिमिटेड owns 25% of voting power of B. Omega Bank also provides a finance to B at a market rate of interest, on account of which Omega would have the power to nominate a person to board of directors of B. Any major transaction proposed to be entered by B would need a consent of Omega. Will Omega be considered as a related party? Yes. क्यों? पहले तो उनका 25% है. 25% तो पैरा 3B के अंदर आ गया. एसोसिएट आ गया ना. A Limited has two associate, B Limited and C Limited, okay, and owns 25% voting power of B and 30 of C.
Would B Limited be considered as a related party for the purpose of financial statement? C. No. There is no concept of fellow associate. There was a concept of fellow subsidiary. See, A controls whom? B and C. Not through subsidiary. B and C are not subsidiaries. Associates. So, for B, who is a related party? A. For C, who is a related party? A. Whether C is a related party for B? No. I hope you understood. सेम क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं. सो आज आपके पास टाइम है. आज अपने FM पढ़ना चाहिए. 3 चैप्टर जो टेस्ट के हैं. जो भी बच्चे सिंसियरली पास होने में इंटरेस्टेड है, कल टेस्ट लिखना चाहिए, दोपहर में पढ़ना चाहिए. तो वापस ये सारे स्टैंडर्ड 2-3 घंटे लगेंगे क्विक ओवरव्यू लेने के लिए. और शाम में फिर आप मूवी देखना, कुछ भी आपको जो चाहिए वो. सी यू टुमारो. सी यू ऑन मंडे.